Ubisoft is responsible for giving us some of the most iconic video game series out there. एक जो सबको पता है Assassin's Creed series. भले ही अब ये गेम्स का सब मजाक उड़ाते हैं, but it can't be denied that this series is as iconic as the Grand Theft Auto and Call of Duty series. Tom Clancy's game series, Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon और Watch Dogs, Prince of Persia and खासकर Far Cry series. और मुझे आज ये वाली सीरीज पे फोकस करना है. Far Cry games are known for their robust open world, beautiful world setting, but especially for their charismatic villains. Like seriously, in games के antagonists are awesome. Far Cry 3 is easily the best game in the series. Burning the Weed Farm mission, Jason's descent into madness, and the incredible performance by Michael Mando as Vaas. Easily the best Far Cry game. लेकिन not my favorite Far Cry game. That is Far Cry 4. इट्स लाइक जब आपसे कोई पूछता है सबसे बेस्ट धूम कौन सी है. द करेक्ट आंसर एंड द राइट आंसर इज धूम 2 ऑब्वियसली. लेकिन कम ऑन, नथिंग कैन बीट द आइकॉनिकनेस ऑफ धूम. उसी तरह मेरा फेवरेट फार क्राई 4 है. पेगन मिन इज माई जॉन एब्राहम. और ये वीडियो में मैं बस इस गेम के बारे में सिम्प करने वाला हूँ, विच इज़ अ वेरी इजी टास्क फॉर मी. So if you have never played this game before or love this game as much as I do, just kick back and enjoy the brilliance of Far Cry 4. Far Cry 4 is the Ubisoft game जो मेरे दिल के सबसे करीब है. पता है क्यों? Because this was the first game that I bought for my Xbox 360. इसके अंदर फार क्राई की सीडी है भी नहीं. इट्स मिडनाइट क्लब इन देयर. पता नहीं कहाँ गई मेरी फार क्राई की सीडी, बट हे, आई लव दिस गेम. अब अगर आपने पहले कभी कोई फार क्राई गेम नहीं खेला है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट द बेसिक प्रेमिस और द कॉन्सेप्ट ऑफ फार क्राई गेम्स आर. The protagonist of these games, they somehow end up in an island or a country or whatever, which is usually run by the bad guy. They can be dictators, warlord, cult leaders, and sometimes stars in Breaking Bad. देख रहे हो यूबीसॉफ्ट की पुल कितनी स्ट्रांग है. फिर आप उस कंट्री के ऑप्रेस्ड लोगों से मिलते हो. यू लर्न अबाउट द कंट्री, इट्स पीपल, इट्स कल्चर, एंड आप उनकी मदद करते हो टू बीट द बैड गाय. एंड द आइडिया बिहाइंड दीज फार क्राई गेम्स इज दैट द प्रोटैगनिस्ट अब ऐसी कंट्री में आ चुका है विच इज फार फार अवे फ्रॉम हिज होम. दैट इज वाई फार क्राई. एंड द गेम प्ले ऑफ दीज गेम्स इज हाउ योर पेरेंट्स डिस्क्राइब्ड हाउ दे गॉट टू स्कूल. पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, नदियां पार करनी पड़ती थी, जानवरों से लड़ना पड़ता था, यूप्ले के थ्रू लॉगिन करना पड़ता था. वेट, व्हाट? सो अब फार क्राई गेम्स का कॉन्सेप्ट आपको होपफुली समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स डाइव डीपर इनटू फार क्राई 4. Far Cry 4 takes place in Kyrat, which is an imaginary country between Nepal and India. And no, Kyrat is not in Bhutan. सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं इस गेम के बारे में, लोगों को लगता है कि ये गेम is based in India, and that is not entirely true. This game is actually primarily based in Nepal. But गेम का main focus है Himalayan areas को represent करना. So it makes sense कि गेम नेपाल and some Indian northern states पे based हो. The open world is heavily inspired by Tibetan Buddhism and Hinduism. और मैं क्या ही बोलूँ, Ubisoft की आर्ट टीम, they knock it out of the park with every single game that they make. Even in the terrible games, their art department goes crazy. Like Far Cry 4 की आर्ट टीम ने इतना अच्छा काम किया है in replicating the culture of Nepal and Indian northern states that it's truly remarkable. Like अगर आपकी हिमाचल या उत्तराखंड की ट्रिप नहीं हो पा रही ना, just play Far Cry 4 instead. So when you do go, you'll realize कि Ubisoft की आर्ट टीम ने कितना अच्छा काम किया है. आप ये गेम खेलते हो एज अजय गाले, जो किराट आता है अपनी मम्मी ईश्वरी गाले की लास्ट विश पूरी करने. गेम शुरू ही होता है बाय जॉइनिंग इन ऑन दी लेट्स मेक फन ऑफ बिहार मीम से. कहाँ पे आ रहे हैं? पटना बॉस, पटना. गेम के स्टार्ट में ही यू आर इंट्रोड्यूस टू द हेवी, द लीडर स्लैश डिक्टेटर ऑफ किराट, Pagan Min, and I really love Pagan Min. To me, he is the most iconic villain in the Far Cry series and not Vaas. Maybe it's the twink yet scary persona that he has. Maybe it's that hairstyle or that pink suit. And plus, he is really funny too. Let's see how much Kanye is going for. Do you follow him on Twitter? In his gold. Oh, I would love to shoot the breeze with that young man. मैं तो पेगन मिन जैसे बाल रख भी लेता स्कूल में अगर मुझे मेरे पीटी सर से डर नहीं लगता तो. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट परफॉर्मेंसेज बाय ट्रॉय बेकर. एंड बिफोर यू गेट मैड, मैंने अभी तक द लास्ट ऑफ अस नहीं खेला है, सो मे बी जोल इज मोर बेटर, बट फॉर मी राइट नाउ पेगन मिन, आई रियली लव हिम. लेटर ऑन यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू सबाल एंड अमिता, who are the two big leaders of the Golden Path, which is the organization that is rebelling against Pagan's oppressive regime. And guess who started the Golden Path? Mohan Gale, the father of Ajay Gale.
बट मोहन गाले डज नॉट अपीयर इन द गेम बिकॉज ही वॉज असैसिनेटेड। तो अब आपको लग रहा होगा कि गेम में अब तो यार अजय को बहुत सीरियस डैडी इश्यूज होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो हु आर द वंस हु हैव लाइक सीरियस डैडी इश्यूज? अमिता एंड सबाल। वो हर कट सीन में एसेंशियली एक ही चीज कहते हैं, अगर तुम्हारे पापा आज जिंदा होते तो बहुत नाराज होते। अमिता और सबाल का विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ किराट एक दूसरे से काफी अलग है। Essentially, Amita is a liberal and Sabal is a hard right winger. So of course at many points in the game you need to make the decision who you should help, Amita or Sabal. आपका मेन गोल होता है द गोल्डन पाथ की हेल्प करना एंड कंप्लीटिंग योर मदर्स लास्ट विश। और आप जब इस गेम में प्रोग्रेस करते हो यू ऑल्सो लर्न अ लॉट अबाउट योर फैमिली, योर फादर, योर मदर एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ किराट एज वेल। सो गोल्डन पाथ की हेल्प करने के लिए आप पेगिन मिन की रॉयल आर्मी के बेल टावर्स एंड आउटपोस्ट्स को लिबरेट करते हो। बेल टावर वाला कॉन्सेप्ट इज लिटरली द सेम एज असैसिन्स क्रीड का वो ईगल वाला बकवास। बेल टावर्स लिबरेट करने पे आपको फ्री में गन्स मिलती है, ऑल्सो वूकॉन्ग का म्यूजिक सुनने मिलता है। और दूसरा है आउटपोस्ट लिबरेट करना, जिसमें कभी कभी बहुत मजा आता है। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू कैप्चर एन आउटपोस्ट। The first option is the stealth approach, sneaking in, taking down enemies one by one without being detected. The second option is the Salman Bhai approach, बस आउटपोस्ट के अंदर घुस जाओ and go crazy. Very एक था टाइगर कोडेड। Now ये दोनों options are nice, लेकिन मेरा personal favorite, you know which is my favorite approach? The third approach, the oh my friend Ganesha approach. You see, हर आउटपोस्ट के आसपास एक हाथी होता है, so just unlock the elephant riding perk and go crazy. मैं कह रहा हूँ बहुत मजा आता है। The map of this game is fairly big, which is filled with bell towers and outposts. तो आपको जितने भी अप्रोच ट्राई करने कर सकते हो, लेकिन especially oh my friend Ganesha, do not miss out on that. Now about the campaign missions in this game, there's only 32 of them. ये सारे कैंपेन मिशंस आर द मेजर फैक्टर्स जो इस गेम की स्टोरी को प्रोग्रेस कराते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर अ लॉट ऑफ फन। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद पता है कौन से आते हैं? वो हाई या ट्रांस वाले मिशंस, विच इज़ अ स्टेपल इन एवरी सिंगल फार क्राई गेम। आई लव देम, दे आर अ लॉट ऑफ फन। एक बेस्ट चीज जो फार क्राई गेम्स की होती है इज दैट हाउ द गेम्स AI interacts with its world. Now since the development of these games are usually rushed, I mean come on, it's Ubisoft, of course it's rushed. So not everything in the game is play tested, which leads to some of the most hilarious bugs you'll see in a video game. I mean there are no major bugs, they're all very minor bugs which just make the games even more funnier. एक और फन चीज जो मैंने नोटिस की थी कि सिंस इन दिस गेम आधे से ज़्यादा NPCs हिंदी या नेपाली बोलते हैं, सो व्हेन द NPCs गेट एंग्री यू शुड, इट्स रियली वर्थ हियरिंग देम स्वेयर इन हिंदी। इट साउंड्स लाइक कोई 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ने जस्ट गाली देना सीखा है। दिया साला, बी केयरफुल। Hey, hey, back off. What the fuck? Oh my God. इस गेम में इतने सारे ब्रोकन चीजें हैं कि द गेम नेवर स्टॉप्स बीइंग फनी। आई हैव द परफेक्ट वर्ड विच डिस्क्राइब्स द ओपन वर्ल्ड ऑफ फार क्राई गेम्स, chaotic, बिकॉज कुछ भी होता है इस गेम में। अब रही बात इस गेम के कॉम्बैट एंड गन प्ले की, देर आर सम कूल टेक डाउन्स दैट आर वर्थ अनलॉकिंग। गन्स आर डिसेंट बट मोस्ट फन आर द bow and arrows and explosives, grenade launchers, RPGs, C4s and सबसे बेस्ट equipment. Easily the best equipment in Far Cry is the wingsuit, because it is fun to fly around the map and cover huge distances quickly. It is very Tom Cruise coded till it bugs out and you randomly die. बहुत बार होता है, you'll get used to it, don't worry. Far Cry 4 में बहुत सारे vehicle options हैं, and again I have to give credit to the art team. Like the truck design is exactly the same. It's exactly the same. Then the game also has an Omni in it. लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटेड था ओमनी से, बिकॉज वेयर इज द चाइल्ड किडनैपिंग साइड क्वेस्ट। लेकिन इस गेम में देयर इज द अल्टीमेट व्हीकल, एंड नो इट्स नॉट एन एलिफेंट बट एन ऑटो रिक्शा। यू आर टेलिंग मी यू कैन डू एक्शन स्टंट्स व्हाइल ड्राइविंग एन ऑटो? टेल मी दिस गेम इज नॉट इंस्पायर्ड बाय धूम 3। मैं मानूंगा ही नहीं। फार क्राई 4 10 out of 10 गेम।
अब मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन सुनोगे? द हंटिंग इन फार क्राई गेम्स मच बेटर देन हंटिंग इन द रेड डेड गेम्स. द थिंग इज हंटिंग इन रेड डेड इज सो रियलिस्टिक दैट कभी कभी बोरिंग हो जाता है. इट बिकम्स लाइक अ टास्क और अ चोर. लाइक मुझे इतनी हंटिंग इतने ध्यान से नहीं करनी है. लेकिन हंटिंग इन फार क्राई गेम्स देयर आर नो रूल्स. हाँ भाई, बेर हंट करो ना ग्रेनेड से, किसने रोका है? Grenade out. This reminds me of that quote by Gabe Newell where he says that how is being more realistic more fun? Go fix your game, Rockstar. लेकिन तुम लोग को पता है Far Cry 4 का सबसे coolest part क्या है? And no, it's not going to the Himalayas and hunting for Yetis. ये आदमी को बिल्कुल मत बताना. Far Cry 4 का best part for me is Shangri-La. Easily. Shangri-La वाले parts ये game में like they are so pretty. Like honestly one of my favorite moments in a Ubisoft game. And again hats off to the art team because Shangri-La is an experience and a half. और Shangri-La का सबसे best part पता है क्या है? And no, it's not the tiger, even though that is very cool. It's the fact that all the Shangri-La segments are in Hindi. मुझे राजा के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन मुझे थोड़े अलग ही काम के लिए चुना गया. मुझे भेजा था धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए. लाइक 15 साल के आर्यन का माइंड ब्लो हो गया था. क्या मेरी फेवरेट कंपनी का गेम के पार्ट्स अब हिंदी में बन रहे हैं? ओ माई गॉड, आई लव दिस कंपनी सो मच. लिसन, मैं ऑब्वियसली ये गेम के बारे में और बात कर सकता हूँ. आई कैन टॉक अबाउट द क्राफ्टिंग, द स्टोरी एंड द साइड कैरेक्टर्स, बट द साइड कैरेक्टर्स आर सो वन डायमेंशनल कि फिर आपको गेम खेलने का मन ही नहीं करेगा. सो जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस. इफ यू हैवंट प्लेड एनी फार क्राई गेम और इफ यू हैवंट प्लेड फार क्राई 4, आई हाईली रिकमेंड दैट यू प्ले दिस गेम बिकॉज दिस गेम इज अ लॉट ऑफ chaotic फन. और ये गेम उतना लंबा है भी नहीं. यू कैन बीट दिस गेम इन लेस देन 30 minutes. Yes, there is a secret ending in this game. Like I seriously mean this, do not miss out on this game. और अगर आपने पहले कभी कोई Far Cry नहीं खेला, then definitely play Far Cry 4 because you will love it. I can guarantee it. मुझे ये पार्ट के लिए पीछे होना पड़ा because I want to thank all the members, the people who decided to buy the membership for my channel, whether you're a gamer or a producer, and if you decided to go for the producer tier, thank you so much. It means a lot to me. The amount of overwhelming support that I got, not on the video but on the stream as well. मैं तो पागल हो गया था देख के. I did not expect this. The response has been great so far. And thank you so much for supporting the channel. It means a lot to me. अब मैं जा रहा हूँ Far Cry की CD ढूंढने because I don't know where the fuck I kept it. Because अगर इसके अंदर Midnight Club है तो where the fuck is Midnight Club?